Friends, this is Kaushal Kishor. Welcome to SpeakNowEnglish.com. This is one of the unique and practical method to become a speaker of English. This would provide you one of the best opportunity to become a speaker of English. Now, being as a trainer, I have been developed this program, which is on the base of workshop. For the last 20 years, I have been taught for the spoken English trainee to become a native speaker of English. And this is really one of the helpful, unique, creative, and practical learning method to become a native speaker of English. Tense, काल. What is tense? काल क्या है? Whatever time takes to do any action or work is called tense. किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे tense कहते हैं. Work finish, काम समाप्त होता है. Work finished, काम समाप्त होता था. Work will finish, काम समाप्त होगा. There are 3 kinds of tense. टेंस के 3 प्रकार होते हैं. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? वर्तमान काल क्या है? इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट वर्क फिनिश इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. इस भाग में हम पढ़ते हैं कि काम वर्तमान काल में समाप्त होता है. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. 4 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं. प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. एग्जाम्पल, आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ. आई हैव गॉन टू द मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूँ. आई हैव बीन गोइंग टू द मार्केट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँ. Past tense, भूतकाल. What is past tense? In this part, we study about work finished in past time is called past tense. इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम भूतकाल में समाप्त होता था, उसे भूतकाल कहते हैं. There are 4 parts of past tense. 4 प्रकार के भूतकाल होते हैं. Past simple और indefinite tense, सामान्य भूतकाल. Past continuous और imperfect tense, अपूर्ण भूतकाल. Past perfect tense, पूर्ण भूतकाल. Past perfect continuous tense, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल. Example, I went to the market, मैं बाजार जाता था. I was going to the market, मैं बाजार जा रहा था. I had gone to the market, मैं बाजार जा चुका था. I had been going to the market for 2 hours, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा था. Future tense, bhavishya-kal. What is future tense? In this part, we study about work will finish in future time is called future tense. इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम भविष्य काल में कंटिन्यूस रूप से समाप्त हो रहा होगा. There are 4 parts of future tense. 4 प्रकार के भविष्य काल होते हैं. Future simple और indefinite tense, सामान्य भविष्य काल. Future continuous और imperfect tense, अपूर्ण भविष्य काल. Future perfect tense, पूर्ण भविष्य काल. Future perfect continuous tense, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल. Example, I shall go to the market, मैं बाजार जाऊंगा. I shall be going to the market, मैं बाजार जा रहा हूँगा. I shall have gone to the market, मैं बाजार जा चुका हूँगा. I shall have been going to market for 2 hours, मैं बाजार 2 घंटे से जा रहा हूँगा.